Okay, so before we begin, I would ask Shiza to describe what we are doing and this whole purpose of making this interest group in a few words. Thank you, Shiza. Our guest speaker for today, Professor Dr. Madeeh Hashmi, and everyone who has joined us, Assalamu alaikum. I am Shiza Tisham, final year MBBS student from King Edward Medical University. And on behalf of KemPsych, I welcome you all to this talk on the series Choose Psychiatry. Before I tell you exactly what KemPsych is, I would like to take you back to September 2020. It was back then in September 2020 when I, along with some of my student fellows from King Edward Medical University, got the opportunity to attend an internship in psychiatry held by the Psychiatry Department of Mayo Hospital, Lahore. It was a 15-day internship program where we saw patients, had research discussions, their methodologies, had presentations and whatnot. It was basically my and most of the members' first experience as an undergrad internship program. And it was then and there that we felt the utmost need of having such initiatives and programs much more often for undergraduate students. So basically this aim of creating and providing a platform, a co-curricular platform to medical students of King Edward Medical University specifically, and medical students all across Pakistan particularly, laid the foundation of KemPsych. KemPsych has the aim of formulating a learning and research community for medical students all across Pakistan, exploring the areas which are yet unknown to us, and encouraging and inspiring medical students to join psychiatry and contribute to the field of psychiatry. We hope that this initiative will facilitate not only the students, but the future of psychiatry in Pakistan. So we look forward to a great learning experience under the supervision of our teachers and seniors. And the opportunity which was given to us by our teachers and seniors, we hope to take it forward to our juniors. Thank you. Thank you, Shiza. So before we begin, I just want to introduce my mentor and Dr. Madeeh Hashmi. तो मैं डॉक्टर मदेह हाशमी साहब से तकरीबन 3 साल से मिला और अब ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं और मैं इनका सर खा रहा हूँ और उम्मीद है आगे भी ये बर्दाश्त करते रहेंगे और बड़ी खुशी के साथ जब भी मौका मिला जब भी हम कोई भी चीज़ इनके पास लेकर गए वी वांटेड टू डू समथिंग ही वाज वेरी हेल्पफुल वेरी मोटिवेटिंग हमेशा उन्होंने कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और समहाउ और किसी भी तरह हमें फैसिलिटेट करते तो Who is Dr. Madeeh Hashmi? Dr. Madeeh Hashmi is tenure track professor in King Edward Medical University. He completed his medical school from King Edward Medical University and then he went to United States in Baylor College of Medicine. वहाँ पर he held certain faculty positions and फिर उनको हुआ कि भाई अब वापस पाकिस्तान चलना चाहिए और कुछ पाकिस्तानियों के लिए काम करना चाहिए. And then he came back to Pakistan in 2010. और ये like I am the evident, or you can say someone who has seen how our psychiatry department has grown under his leadership for the past 10 years. And right now he is a professor here and his journey started as an assistant professor here in 2010. So welcome, sir. Thank you for joining us. And it means a lot that you've found time from your busy schedule for our little meet and greet. Thank you, Ishi. So, sir, before beginning, just let us know a little bit about how was your medical school? आप medical school में कैसे थे? कैसा रहा आपका? और कैसे ये psychiatry क्यों? उस time पे तो आज से भी ज़्यादा मसले मसाइल थे. तो why psychiatry at that time? Oh, okay. Well, thank you. First of all, I must appreciate the efforts of KemPsych, the Psychiatry Interest Group. I noticed we have an AKU student there. Mohammed is here, and I must give credit to AKU and also my very dear friend Professor Aisha Mia, who was recently the chair of psychiatry at AKU. And the idea for a psychiatry interest group, which I suggested to you, came when I saw the AKU psychiatry interest group and how they were very proactively promoting interest in psychiatry and encouraging medical students to hold seminars and
so on and so forth. यूशे ने जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्स है यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया जो कि वो खुद हैं. So this entire initiative, including KemPsych, Shiza is here, but the reason I got connected to Shiza and her peers was actually because of Yushe. And you know, we really need someone with his energy and initiative and enthusiasm to create things of this sort, which can take our field forward, you know, for the next generation. आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं अपना बता देता हूँ. वैसे तो मेरे नाना फैज अहमद फैज साहब ने लिखा था कि अपने बारे में बात करना बोर लोगों का पेशा है, लेकिन आपने मुझे इनवाइट इसीलिए किया कि मैं अपने बारे में बात करूं, so I will do that. So I actually I suppose like many of us, I didn't really I didn't come to medical college in a decided manner. I was a good student. I was just telling my son just an hour ago, he's mashallah about to finish his A-levels and wants to be a medical student soon, inshallah. So I was saying that metric किया, math और physics का शौक नहीं था, बोल गया यार तुम्हारे नंबर बड़े अच्छे आते हैं, तुम डॉक्टर बन जाओ. Didn't have anything else in mind. ठीक है, बन जाते हैं, sounds like a good idea. Pre-medical कर ली, GC से KE में दाखला हो गया. I was fortunate to get into King Edward, which was then and still is a top-rated institution. उस वक्त किंग एडवर्ड कॉलेज होता था, अपनी यूनिवर्सिटी है. I didn't really have a very good time in medical college in terms of not gaining much from the instructional system, the educational system, and the education system not helping me to explore my full potential. And now as a teacher at KE for the last 10 years, I know unfortunately that we as the faculty have not been able to do as much as we need to do to change that system, to help all of you. क्योंकि मैं KE में पढ़ाता हूँ और KE के लोग भी हैं यहाँ पे, but this probably applies to all medical colleges. Anyway, long story short, I was a decent medical student in the upper half of my class in KE, but not at the top. I had a couple of distinctions, community medicine and pharmacology, very distinctions. Primarily, I think the distinctions were, and I guess this is a lesson I learned in medical college, because I had teachers who inspired me to study hard in those subjects. So मैंने बहुत मेहनत की pharmacology में, because I had a very inspiring teacher, Dr. Madeeh Hashmi. He's a nephrologist, and he was actually a demonstrator at that time, but very progressive, very forward-thinking. He told me many years later, जब हम अमेरिका मिले, कि उस साल उन्होंने pharmacology का जो curriculum था, उसको revamp करके उसको objective और ज़्यादा structured किया था. And उस साल तकरीबन 13 distinctions आई थी pharmacology में, because you know all the students, because they were teaching it in a more fun way, they were teaching it in a more, you know, in a way that aroused our interest. So we all were very interested in it. मैंने मेहनत की. Community medicine में जो उस वक्त हमारी professor थी, Professor Zaida Mir, you know, she took a liking to me. She knew my mother who was in the media, and Professor साहब ने एक दफा क्लास में आके announce किया कि मेरा दरवाजा हमेशा आप सब लोगों के लिए खुला हुआ है. So I mean एक formality सी चीज है, but मैंने सोचा कि जब उन्होंने कहा है तो फिर खुला हुआ है, तो ठीक है खुला हुआ है, और मैं उनसे मिलने चला जाया करता था. I used to walk into her office and sit with her, and उनके डेमोन्स्ट्रेटर भी कहा करते थे कि ये लड़का जो है मेडिकल स्टूडेंट, ये प्रोफेसर साहब के दफ्तर में आ जाता है, वो उसको कुछ भी नहीं कहती. So but I liked her, you know, she liked me, I liked her, I liked sitting with her, I liked talking to her. So you know, the inspiring teachers make a lot of difference in the life of a medical student. After graduation, I did my house job. I was not, you know, I still wasn't decided about psychiatry really. Even during house job, I knew that I wanted to go to America to do my training because my father, मेरा थोड़ा सा कुछ know-how था about mental health and psychology, because my father is actually a psychologist, and he did his master's in psychology from the US. I think he was one of the first psychologists, or maybe the first one. In the early 70s, he went to the US to do master's in psychology, and then did that and all that. So उसके बाद फिर many years later, my mother went and did a master's in education from the US, and they were the first two in our family to go to the US for further education. So मेरे ताया जो शुएब हाशमी थे, he went to England. He studies economics in England, and my khala Salima Hashmi studied art in England.
So my father was the first one who went to the US. वो psychologist थे तो मुझे थोड़ा सा know how था psychology और उनकी किताबें उनकी study में होती थी, which I thought were quite interesting. They were psychology की बातें थी, उसमें इसकी चीजें होती थी. So I sort of had some idea कि यार ये sounds sort of interesting. During house job, I was again just telling my son, the medical rotation, didn't like it at all, didn't know what I was doing, didn't have any help, all that. Surgery was quite fun. I enjoyed surgery. Didn't enjoy the hours, very long hours, ward weeks and 48-hour emergency and this and that. अच्छा था, मजा आया था. फिर orthopedic surgery की, वो भी अच्छी चीज थी. लेकिन मुझे था बस कि यार ये psychiatry जरा देखने की ये होता क्या है. I mean, I wasn't sure. To be honest, my psychiatry house job was not a lot of fun. I mean, I didn't really find any inspiring teachers when I did my house job in psychiatry. So, but I already had an interest in it from before, or it was more of a sort of a rule out thing. यार मुझे ये भी कोई खास पसंद नहीं, ये भी कोई खास पसंद नहीं. अमेरिका जाने का शौक था. एमिली उस वक्त पुराना इम्तिहान एफएमजीएम तो होता था, उसका मेरा स्कोर डिसेंट था, and I knew that I had good enough scores to get into a good program in psychiatry. अब तो psychiatry बहुत competitive हो गई है. So that's kind of how I, my Yusha आपने mention किया था family reaction when a young doctor or medical student announces psychiatry. So, I'm the oldest in my family. I was just talking to one of our house officers today. I'm really the first and only practicing doctor in my family. अभी भी I'm the only one. So मेरी family में कोई उस तरह से doctors नहीं है जो मुझे guide करते कि ये करो, ये वो करो, ये जो खुद कर रहे होते हैं. So and when I told my father that I want to be a psychiatrist, he was cautiously supportive. He's a psychologist, so he has a rather low opinion of psychiatrists. I hope I've changed his opinion somewhat, a little bit. लेकिन वो psychiatry psychology की rivalry है ना थोड़ी सी, वो उस तरह से करके. But he never discouraged me. He said, sure, if that's what you want to do, that's fine, go ahead. अब भी जब मैं अमेरिका में था तो the first year was tough. The first year is always tough because you're settling in a new place, नई जगह सारा. So I would get homesick or all of that. और फिर वहाँ पे बिल्कुल फर्क social system है. But during that time, my father was extremely supportive. He, करो अच्छी बात है, नई चीज सीख रहे हो, ये all that. Baylor was my dream program, जहाँ पे मैच हुआ था मैं. So Houston was a very nice city. So अमेरिका पहुँच के थोड़ा time लगा to get warmed up. But by the time I started my second year, I was feeling much more comfortable with my career choice. अब इसमें आप देखो कि I was even during my residency, I was having some not second thoughts really, but I was not certain कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए. और आपने एक voice message में earlier बताया था कि my uncertainty, I think, in addition to एक psychiatrist जो बनना चाहते हैं उनका एक अपना सोचने का समझने का तरीका होता है. We like to think and reflect and think deeply about things. लेकिन I mean, psychiatry is the sort of the least medical of all the medical specialties. There's still a lot of social stigma about psychiatry, at least in Pakistan. Psychiatry का जो scientific जो foundation है वो भी बनना शुरू हुई है, बन रही है अभी. So all of those things तो मेरे ज़हन में था. फिर मुझे याद है 95 में I started my residency in 94 in Houston, July of 94. 95 में we heard about this wonderful new invention called the internet. एक नई चीज आई है दुनिया में जी, इंटरनेट एक चीज होती है, वो आप कंप्यूटर पे जाते हैं तो फिर आप खबरें पढ़ लेते हैं. It is all very wonderful. So in somewhere in 95 I discovered उस जमाने में होते थे वो चैट ग्रुप्स होते थे, टेक्स्ट चैट ग्रुप्स होते थे, पता नहीं इसको क्या कहते थे. तो उसमें I found this whole community which, for want of a better word, could be called the sort of the anti-psychiatry movement or critical psychiatry, anti-psychiatry. Online, उनके chat groups बने हुए थे और वो कहते थे कि जी psychiatry कुछ नहीं होती है, pseudoscience होती है psychiatry. और फिर I discovered gradually that it's a school of thought that goes back since the beginning of psychiatry itself, actually, since the beginning of mental health. So वो एक थोड़ा सा I guess you could call it an existential crisis कि यार ये तो मेरा जो field है, जो मेरा chosen profession है, ये तो उसकी foundations को ये question कर रहे हैं कि ये कोई चीज होती भी है कि नहीं होती. Anyway, चलता रहा मामला. अब ये in retrospect from where I am today,
अब तो the incidence of mental illnesses, the prevalence of mental illnesses, the awareness about mental illnesses, even in a country like Pakistan, is so much more than it used to be back then. But I think some of those foundational questions are still there. आपके KE में, हमारे KE में एक graduate है, Avais Aftab, Dr. Avais Aftab, his name is, and he's attending now in the US. He was one of my earlier mentees. He's a 2010 or 11 graduate. And Avais is very interested in the sort of philosophical questions underlying suffering क्या होती है, illness क्या होती है, disease किसको कहते हैं, क्या जो हम चीजें treat कर रहे हैं वो illness के सूबे में आती भी हैं, all of that. So वो questions अभी भी किए जा रहे हैं, किए जाने चाहिए भी, अच्छी बात है. My considered opinion regarding those issues is that as a specialty, we are still pretty much in our infancy, because the understanding of the brain, the mind, the connection between the brain and mind is still very rudimentary. अभी तो हमने समझना शुरू किया है कि brain और mind का connection है क्या, mind होता क्या है, mind की neurobiology क्या है, वगैरह वगैरह. So वो सवाल अच्छी बात है, वो सवाल होते रहने चाहिए. Psychiatry is so much more than just writing medications or diagnosing illnesses, and this is why I love it. The reason being that मेरे बहुत सारी और interests हैं, humanities and poetry and literature and ethics and all that can really all be considered within the umbrella of psychiatry. So हमारा जो काम है, जो psychiatrist का काम है, ये mental health वालों का, psychologist का जो काम है, it really there are so many lens, there are so many aspects to it, और उसकी फिर उसी तरह से उसकी application भी ज़्यादा है. I think वो जो सवाल है कि psychiatry कुछ है भी या नहीं, या mental illness कुछ है भी या नहीं, I think that question has been more or less settled. I mean, जो लोग वो सवाल अभी कर रहे हैं, I think उनको थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि वो I think their understanding is lacking in terms of and any intelligent physician, surgeon, gastroenterologist, cardiologist will tell you that a third or a half of what they treat is either the condition they are treating plus mental distress symptoms, mental distress symptoms which present as the condition they are treating. So gastroenterologist hai, पेट का दर्द है, ये है, all of this. So जो लोग थोड़े से इस मामले में जरा सहीन है, sensitized है, थोड़ा aware है, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, they know what we do, they appreciate what we do, they are very वो पसंद करते हैं इस चीज को कि हम उनकी हेल्प करते हैं. लेकिन हम जिन सवालों से, जिन कंडीशन से हम डील करते हैं, उनकी कोई आसान हल उनके है नहीं, उनकी कोई प्रिस्क्रिप्शन से उसका सिर्फ हल हो नहीं सकता. उसमें और इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, रिलेशनशिप, फैमिलीज और all of that. So उससे वो कभी-कभी हमारे कोलीग जरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार इस मसले को जल्दी से हल करो. अब जल्दी वाला मामला जो काम हम करते हैं, sometimes हो सकता है, sometimes नहीं हो सकता. But when you're talking about things like maladjustment in society, या कोई medical student है कोई, I mean I was a medical student, some of you are medical students. A medical student who's in medical college without having thought about it, but now is an unhappy medical student because they're not sure that this is what they want to do. अब इसका कोई जल्दी हल है नहीं. I mean, this is something that has to be explored with them, and they have to be helped to understand what's happening. So, और उसमें हमारी स्पेशलिटी में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी एप्लीकेशन हर चीज में है. So mental health principles, mental health understanding, psychological principles apply to pretty much everything you can think of, to factories, to workplaces, to education institutions, to relationships. कहीं पे भी आप अगर आपको उसकी अच्छी understanding है. So it's a very broad field. I mean, I'm still learning. I'm a student of psychiatry. I don't think I'll ever be an expert in psychiatry. But compared to when I was a house officer, when I was a resident, I'm having a lot more fun now. I really am.
Thank you so much, sir, for explaining and taking us through from all this basic questions within the psychiatric field. Unfortunately, ना medical curriculum में उस तरह हमें medical neuroscience पढ़ाई जाती है, cognitive neuroscience पढ़ाई जाती है, जो कि ना psychiatry की उस तरह कुछ basics और चीजें पढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से एक काफी सवाल और हो जाता है. Even जो medical students और doctors होते हैं, they just ask like करते क्या है ऐसा psychiatrist, like क्या जब एक बंदा इनके कमरे में जाता है तो फिर बाहर निकलता है तो उस कमरे के अंदर हो क्या रहा होता है. तो प्लस डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी साइकाइट्री इज स्टिल behind from the advanced and developed countries. So can you like put some light on these two kind of things? एक तो what differences have you seen between US and Pakistan, because you have worked in both places, and एक डेवलप्ड कंट्री में साइकाइट्री की क्या सूरत हाल है और वहां पर क्या नजर आती है. और सेकंड कि जब कोई बंदा अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है रेजिडेंसी की या पाकिस्तान में एफसीपीएस साइकाइट्री की, तो वो 4 साल क्या करता है? क्या सिर्फ वो बैठ के लोगों से बातें करता है या कुछ और भी करता है? राइट, सो आई थिंक पहले मेडिकल एजुकेशन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. और उस पे तो आई थिंक देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट द फैक्ट दैट आवर teaching and training of medical students in behavioral science and psychiatry is extremely deficient. I think 10-12-15 साल पहले जब प्रोफेसर मुबशर अल्लाह बख्शे जब उन्होंने when he introduced behavioral sciences in the curriculum, I think that was a step forward कि थोड़ी सी कुछ यानी awareness तो कम से कम आई थी कि behavioral science कुछ चीज होती है. But I think a lot more needs to be done. And this is something that I've said on many forums, जिसके बारे में लिखा भी है, अखबारों में भी लिखा है कि जो लोग, those of you who graduated or are close to graduating know this already, but the American system where I trained and where I spent a lot of time, you know, the 5 primary care specialties that a medical student has to have basic competence in include medicine, surgery, gynae, pediatrics, and psychiatry. These are the 5 primary care medical specialties. और हर मेडिकल स्टूडेंट को कुछ बेसिक कॉम्पिटेंस इन सब स्पेशलिटीज में होनी चाहिए बिफोर दे कैन बिकम अ डॉक्टर. अब इसमें से कौन सी चीज मिसिंग है पाकिस्तान में? साइकाइट्री, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीड्स जो है वो सब वो है. साइकाइट्री का किसी को नाम निशान नहीं पता, ना किसी को. One reason for that is that the policy makers and the administrators, the vice chancellors, the principals themselves don't understand कितनी जरूरी है. आहिस्ता आहिस्ता उसकी अवेयरनेस आ रही है. Instead of psychiatry, we have things like a medical student has to give a professional exam in ENT or eye or whatever. अब ENT या eye या forensic medicine जो हैं, these are sort of ENT or eye just surgical super specialties हैं. I mean, medical students don't need to have an understanding of ENT and eye in order to be, you know, basic. They can do ENT and eye following their graduation. Forensic medicine is also very specialized. I'm just about forensic के जो टीचर है के ENT eye वाले टीचर मुझसे नाराज हो गए, but I mean it is what it is. ठीक है, ENT eye का आपने पढ़ानी, but not at the cost of a primary care specialty like psychiatry. Psychiatry को किसी आप पढ़ा नहीं रहे, बाकी चीजें आप पढ़ा रहे हैं with the tragic result that we are KE की बात कर लेते हैं. We are graduating hundreds of doctors from KE with zero understanding, zero awareness of mental health in general. और उसमें सबसे ज्यादा जो तकलीफ के बाद होती है कि वो डॉक्टर जब खुद उनको प्रॉब्लम होती है, फैमिली में इशू होता है, घर वालों में, उसमें वो बेचारे वो उस वक्त फिर वो भागते फिर रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती है. ऑफ कोर्स द फर्स्ट पर्सन सफर इज योरसेल्फ. इफ यू डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग, अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, चलो वो छोड़ दो, आपकी मेंटल हेल्थ की एप्लीकेशन सर्जरी में भी है, गायनी में भी है, पीडियाट्रिक्स में भी है, ऑल ऑफ दैट. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है, anxiety होती है, you have no idea because you've never been exposed to it, you've never attended a class, you've never seen a patient all throughout your medical curriculum, and then after you graduate you never study it again. आपने psychiatry अगर नहीं की और या हाउस जॉब नहीं किया तो आपकी कोई exposure नहीं है, which means basically you share the same bias that many doctors do कि ये कुछ भी नहीं होता, ये पता नहीं क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं होता, which is like a social bias, which of course also has been around for a long time in terms of कि ये mental illness जो है तो जादू होता है, ये होता है, all of that rubbish. So जो undergraduate education system है that needs serious reform. I'll again pay tribute to AKU और AKU में मैं क्योंकि I'm an examiner for behavioral science in AKU, so I go to AKU to take exams,
And AKU has a very efficient, very simple system, which is 4th year medical college में AKU के students 1 महीने की rotation करते हैं psychiatry में, in which they are assigned to the psychiatry department full time. They basically function as junior house officers, and they have to pass that rotation in order to sit for their final 4th year exam. Very simple. So उसका फायदा ये होता है कि जो शख्स AKU secretary का निकल रहा है, they have to have some basic understanding of mental health. They know about depression, मोटी mental illnesses हैं, उनके बारे में पता है. I have put this proposal multiple times to the higher ups at King Edward. अभी तक तो कुछ नहीं हुआ. One of the, before I retire, I'm going to make it happen, inshallah. So all we need is for 4th year medical students to spend a dedicated block of their time rotating through psychiatry the same way they rotate through medicine and surgery. And then we need to have an assessment system, a test assessment of उनकी rotation के end पे हो, which should be linked to their annual examination, or which should be linked to their progress to the next year of education. कि आप ये pass करेंगे तो आप आगे चलेंगे. और उससे once you link that learning to their exams, then automatically they'll come and they'll class भी पढ़ लेंगे, जो भी कर लेंगे. So कुछ ना कुछ उसमें फायदा हो जाएगा. But आहिस्ता करके, and we have a lot of good people, wonderful people in King Edward now also, and all of you know Professor Naki and Professor Bilkis and a lot of people. I mean, हर department में ऐसे लोग मौजूद हैं जो who understand the importance of mental health and mental illness and who are willing to work with us. Of course, हमारा issue ये है कि हमारी अपनी एक manpower shortage बहुत ज़्यादा है. Psychiatrists हैं ही बहुत कम पाकिस्तान में. Academic psychiatry में भी कम लोग हैं, तो पढ़ाने वाले भी कम हैं, सारा कुछ. All of that is there. The second part of your question, Yusha, was difference between आपने शायद पहले जो मुझसे पूछा था ना कि यहाँ से जाके न्यूयॉर्क से जाके US में रेजिडेंसी की तो कैसे लगा. मैं I hope on is still here. He should be here because the 3rd time मैं AKU की तारीफ करने लगा हूँ. So मैं actually after house job, एक temporary job AKU में आया. So for 3 months I worked as a medical officer at AKU before I went to the US. And I was very thankful for that experience because working at AKU hospital really prepared me well for working in an American hospital. वो Mayo में जो मेरा जो experience था, that would have not been helpful at all in working in an American hospital, whereas the 3 months I spent at AKU prepared me well for that, because of course AKU is run on an American system. उसी तरह से उन्होंने अपना सारा system design किया हुआ है. So वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि you're expected to be autonomous, independent in your own learning. आपने खुद सीखना है. आपने spoon feeding there. क्लासें होती थी, सारा कुछ होता था. But from day one, you're expected to do your work, expected to show up on time, expected to ये भी करना है, जो नहीं आता वो सीखो, पढ़ो, सीखो, पूछो, जो भी करना है. And our structured learning, seminars, classes, rounds, structured होती थी. अब वहाँ पे जाहिर है अमेरिका में उनको फायदा ये है कि उनका टीचर्स ज़्यादा है. हमारे I remember Baylor में हमारे रेजिडेंसी प्रोग्राम में I couldn't even guess, but 30, 40, 50 फैकल्टी मेंबर तो जरूर होंगे at least. These were full time faculty members. उसके अलावा ह्यूस्टन के कोई 300, 400, 300 to 400 psychiatrists and psychoanalysts were on our voluntary faculty. They used to come and give seminars and teach courses and all that. So we had a lot of teachers who we were interacting with and who we were learning from. क्योंकि वहाँ पे उनके पास लोग ज़्यादा हैं जो पढ़ा सकते हैं और जो कर सकते हैं, और फिर वो सिस्टम भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है कि इस वक्त क्लास होगी, इस वक्त राउंड होगा, इस वक्त ये होगा, इस वक्त ये होगा. So that was the fun part, because you learn in a structured system, and that system forces you to become more disciplined and to learn at a certain pace. उसमें जो sort of the social aspect ये था कि going from Pakistan to the USA was a very interesting experience, because America का family system, America का social system, America का वो सारा बहुत फर्क है. Psychiatry is a unique specialty in that we have a lot of interaction with I mean हमारा काम सिर्फ patient के साथ तो नहीं होता, उसमें relationships होती हैं, family members होते हैं, घर कहाँ पे है, काम क्या करते हैं, इस तरह से करके वो सारा. So we really have to be very familiar with not just the individual person that we're treating, but also their environment, their family, their community, their workplace, all of that. So America में तो बिल्कुल फर्क है.
यहाँ से बिल्कुल फर्क है. So वो उसको सीखना, और हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमें यहाँ के सिस्टम की आदत होती है. लेकिन you know, when you're young and you're energetic and you want to learn, it takes a little while, but फिर आहिस्ते समझ आना शुरू हो जाती है. और सबसे अच्छी बात ये है कि I mean in the US and I'm sure in England and all of that, you know, यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, if you put in the effort and you work hard, you know, you find people who are sympathetic, you find people who want to teach you, you find people who are enthusiastic and energetic. And I mean, we certainly in psychiatry department in Mayo here, you know, the people who learn the most are the ones who are energetic and enthusiastic. Like you feel like you and like Shiza and like a lot of people who, you know, you come to my office and sit with me and chat with me. तुमने कहा ना कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, एक दो दफा मैं डांटता भी हूँ, लेकिन वो जो प्यार भरी डांट होती है, वो it is really a way of, I see there's Madeeh Hashmi here, I think she's come to me a time or two. तो उसमें you know, I need to make sure that you're serious about learning and that you want to take responsibility for your own learning. If you're a college student, if you're a university student, the responsibility, and this is one of the basic principles of adult learning, the responsibility for your learning is on you. Whatever you want to learn, you will learn. If you want to put in more effort, you learn more. If you want to put in less effort, you learn less. Passive learning is तो कुछ भी नहीं होता. उसमें जितना आप ज़्यादा उसमें actively आप अपने आप को involve करेंगे, आप टीचर से मिलेंगे, उससे कहेंगे ये बताएं, वो बताएं, all that. So, and you know, people like you, all of you are sitting here who are energetic about this, are a pleasure. It's a joy to work with all of you because उससे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ. I mean, you bring things to me that I haven't, you know, I haven't heard, and I say, यार चलो ढूंढते हैं, बताओ, मुझे भी लिंक भेजो, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी सिखाओ. I think उसमें एक बुनियादी असूल ये है कि I think the best teachers are those who keep on learning, who like learning, who love learning themselves. Those people make the best teachers. And I think that was one thing amongst many other wonderful things that I learned in America. There's no such thing as an expert in anything. We are all students of whatever we are learning, and it's always fun to learn together. So. Thank you so much, sir, for explaining this in detail. Actually, we have a couple of questions from the participants, so I would like to go through them one by one. Please. So there are 2-3 questions which are kind of similar. Which are sent to us directly. So उसमें से एक बार आ रहा है कि हमने ग्रेजुएशन भी कर ली, हमने हाउस जॉब भी कर ली, लेकिन हाउस जॉब में हम साइकाइट्री की रोटेशन नहीं ले पाए. अब हम समझते हैं कि हम FCP साइकाइट्री कर सकते हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? और इसी का एक दूसरा लिंक पार्ट है कि आपके पास एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है. जस्ट फॉर एग्जांपल से मैं आपके पास आया हूं एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड आई हैव नेवर बीन इंटरेक्टेड विद साइकाइट्री बिफोर. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट एंड हाउ वुड यू सजेस्ट कि क्या मैं चुप करके साइकाइट्री पकड़ लूं या पहले मैं एक्सप्लोर करूं या क्या करूं? एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अभी यहाँ पर है कि क्या मेडिकल एजुकेशन में जो फील्ड की कंसल्टेशन के कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, ये कब शुरू हो जानी चाहिए, कैरियर काउंसलिंग और ये सारा कुछ, how can we actually inculcate it within the system? So these are the 3 kind of questions जो कि थोड़े से interrelated. Right. So okay, so जो आखिरी सवाल उससे स्टार्ट कर लेते हैं कि I think once you join medical college, you know, you started out on a career path, and there are multiple options open to you. As far as career counseling, होना ये चाहिए कि starting from first year, we should have interest groups of every discipline. We should have an anatomy interest group, we should have a physiology interest group, a pharmacology interest group, whatever, forensic medicine interest group, gynecology interest group. It should be student driven. It should be driven by students who have an interest in that, but they should have faculty mentors who interact with them, who answer their questions, who meet with them, and who give them guidance about the field that they are interested in. Ideally, throughout the 5 years hona chahiye. And then I think as you go through medical college in 4th year and final year, I think you would probably begin to get a better idea कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं है. Do I want like a surgical specialty? Do I like working with my hands? Do I want a non-surgical specialty? Do I want something which is in the mainstream like gynae or pediatric? Do I want something which is slightly outside the mainstream like psychiatry or physical medicine, rehabilitation, whatever? So हमारे यहाँ जो at least KE की बात मैं कर सकता हूँ because I've only taught at KE पाकिस्तान में. So what actually ends up happening is कि हम लोग वो exploration actually house job में करते हैं आके.
some of us have an interest beginning earlier, third year में हमारी rotation शुरू हो जाती है, fourth year, final year. But जब hands-on जो काम हम करते हैं वो actually सिर्फ हम house job में करते हैं, which actually is a significant defect in our system. वो जो hands-on काम है वो third year से शुरू हो जाना चाहिए. So by the time you are आपकी जो final year की rotation है, you should be, and I've talked about this in multiple fora. जिस तरह again AKU में होता है, a final year medical student assigned to surgery or medicine or gynae or psychiatry, whatever, should basically be functioning as a junior house officer, doing everything that the house officer is doing and attending all this, so that when you actually start your house job, it's a little bit easier. So उसको फिर आप structure कर लें, fourth year में थोड़ा सा जरा less hands-on हो, but so अगर उस तरह से किया जाएगा तो फिर you don't have to wait till the house job to actually experience the specialty hands-on. अब होता ये है कि करके हम house job में फिर हम सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए. एक बात. दूसरी बात, I think you should let's not forget the social factors in our society, which is कि हमारे यहाँ पे individual decision making उस तरह से तो नहीं है. So whatever the young person wants to do, parents, family members, other people have very strong opinions कि क्या करना है, क्या नहीं करना. I still remember, I have a very dear mentee. She's a KemPsych doing pediatrics in America, and she did a house job with me. मेरे से contraction हुआ, उसको interest हो गया, बात हुई, तो उसने कहा जी मेरी अम्मी कह रही है gynecology करो, तुमने gynecologist बनना है. I think because she was a girl, gynecology करो. मैंने कहा बेटा आपकी अम्मी gynecologist है? उसने कहा नहीं सर. मैंने कहा बेटा आपकी अम्मी डॉक्टर है? नहीं सर. तो आपकी अम्मी क्या करती है बेटा? सर वो तो हाउसवाइफ है. Now, Ammi felt very, very comfortable telling the daughter to do gynecology when Ammi was just a housewife. Now, no offense to anyone who's Ammi, but ये हमारे मुल्क में एक तरीका है ना कि जो पेरेंट्स को समझ आती है कि ये करना है तुमने. So really, आप लोग अपना जो opinion है या आपकी अपनी जो passion है, वो तो almost secondary हो जाता है. I mean, you can mention it, but then Abu and Ammi and everybody else has to give permission for you, which is rather silly. But I mean, हमारी society में ठीक है. इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है, आपने वो वॉइस में बताया था कि जी हम अगर कहेंगे कि हमें साइकियाट्री करनी है तो घर में एक सफ़े मातम बिछ जाती है कि जी देखें इसलिए आपको मेडिकल कॉलेज करवाया था. Now and I tell you, many of the postgraduate trainees working with me have said to me, and you know some of them, कि सर हमने जबरदस्ती जोर लगा के अपने अम्मी को कन्विंस किया कि हमने तो यही करना है. बड़ी मुश्किल से माने, लेकिन मान गए. Which I think in most cases, I mean, I'm a parent of almost adult children myself now. If my child says to me कि मैंने ये करना है, and I can tell कि वो उनको शौक है, वो करना चाहते हैं, मैं उनको रोकूंगा तो नहीं. लेकिन पेरेंट्स का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है कि कैसे करोगे, क्या करोगे. So fine, it's your task to convince your parents. इससे जुड़ा हुआ यूशा आपका जो अर्लियर एक क्वेरी थी ना कि किसी ने कहा कि जी हमारा कोई एक्सपोजर मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ साइकियाट्री का और हमने हाउस जॉब भी नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि हम साइकियाट्री FCPS साइकियाट्री करना चाहते हैं. अब उसमें आई वुड बी अ लिटिल बिट कॉशियस बिकॉज साइकियाट्री जरा और तरह की स्पेशलिटी है, उसकी ट्रेनिंग भी और तरह की होती है, उसकी काम भी और तरह का होता है. सो आई वुड एनकरेज पीपल हु हैव हैड नो एक्सपोजर व्हाटसोएवर टू साइकियाट्री to get some exposure before you make a firm decision about. क्योंकि एक दफा आपने FCPS दे दिया या आपने इम्तिहान दे दिया तो फिर तो आप लॉक हो गए ना उस पाथवे में, फिर you can't really deviate then. तो पहले एक आधा महीना 15-20 दिन आप कोई किसी साइकियाट्री डिपार्टमेंट में हमारे पास आके कर लें, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आके you can work as whatever honorary house officer, whatever you just do like an observership. But जिस शीजा ने और इन लोगों ने की थी, क्या बैठे हैं वहां पे हम डिस्कशन करते हैं, ओपीडी में पेशेंट देख लें, यू गेट सम आइडिया कि हाँ हो क्या रहा है और फिर वो डिसाइड करें. क्योंकि अनलाइक अ मोर मेन स्ट्रीम मेडिकल स्पेशलिटी, साइकियाट्री का अपना एक मिजाज है, साइकियाट्री का अपना एक उसनत है. सो वो थोड़ा सा जरा अगर आप उसको चख लें, उसको टेस्ट कर लें, उसको थोड़ा सा देख लें, then you'll be in a better position, because you don't really want to be in a position कि आपने FCPS साइकियाट्री कर लिया है और फिर आप साइकियाट्री में आ गए और अब आप कह रहे हैं यार मैं नहीं करना. But we know it's difficult enough training in psychiatry against the opposition of parents and with the social stigma and all of this kind of stuff. And then if you yourself are not happy, मैंने पहले जिक्र किया था कि साइकियाट्री और साइकियाट्री ट्रेनिंग ऐसी चीज है कि ये सॉर्ट ऑफ एक एक्वायर्ड टेस्ट होता है. मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मुझे खुद भी थोड़ा टाइम लगा था इसमें कंफर्टेबल होने में, बिकमिंग कंफर्टेबल विद माय ओन आइडेंटिटी
as a psychiatry trainee and then as a psychiatrist. So वो तो हमारी specialty का nature है ही. So I would contrast it with, say, with surgeons. People who want to be surgeons don't want to be anything else. They're very sure. एक वो है ना famous लतीफ़ा है सर्जन के बारे में कि एक सर्जन होता है, वो सारी रात ऑपरेशन करता है, बहुत शदीद उसको भूख लगी हुई होती है और सुबह को भूख से मरा जा रहा होता है और सुबह को वो फिर नाश्ता मंगवाता है, नाश्ता आ जाता है तो उसकी भी घर से आती है कि सर वो एक नया ऑपरेशन आ गया, तो आप ऑपरेशन करेंगे पहले नाश्ता करेंगे? वो कहता है मैं ऑपरेशन करूंगा, नाश्ता बाद में करूंगा. So if you have that kind of passion, I mean, and then that's what you should do. And most surgeons, I think, are like that. I mean, they would rather operate than eat. That's fine. That's wonderful. लेकिन psychiatry जरा और तरह की होती है और उसमें थोड़ा सा गौरव फिक्र वाला काम क्योंकि ज्यादा होता है, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा अगर आप एक्सपोजर ले लें, और एक्सपोजर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप किसी के साथ मिल लें, किसी से बात कर लें, जिस तरह शीजा लोग और आप लोग आए थे और हमारे साथ टाइम आपने स्पेंड किया, there's ways to do that and then make an informed decision कि यार ये मैंने ये करना है या कुछ और करना है. But psychiatry training and psychiatry practice is very interesting because we deal with so many things which are not even touched on, जिसका कहीं जिक्र ही नहीं होता मेडिकल प्रैक्टिस में. अभी रिसेंटली हमारी हाउस ऑफिसर हैं, she was Dr. Siddiqa, she's one of yours, I guess. Anyway, she was one of our best house officers जो पिछले रोटेशन में. तो उसने कहा सर मैंने जो साइकियाट्री में सीखा है, अब मुझे बिल्कुल अब शी इज डूइंग हर हाउस जॉब, अभी उसकी चल रही है आई थिंक मेडिसिन की है. तो उसने कहा सर मेरा बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया है साइकियाट्री में काम करके, मुझे मरीजों से बात करना आ गई है, मैं मरीजों की बात मुझे समझ आती है. आई मीन आई हैव अ होल अदर वे ऑफ लुकिंग एट पेशेंट्स सिंस आई हैव बीन इन साइकियाट्री. So it's certainly very interesting, but you should have some exposure to it. को थोड़ा सा एक दफा देख लो, समझ लो. अगर कभी भी नहीं कोई एक्सपोजर हुआ, कभी आप गए ही नहीं हो, कभी काम ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं है, तो then get some of that exposure before you make a final decision. I think you'll be happier. It will be easier for you. Thank you, sir. सर अभी एक दो क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं. एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, मुझे रिसीव हुआ क्वेश्चन. वो ये है कि अगर आप अमेरिका ना जाते तो क्या आप पाकिस्तान से साइकियाट्री कर लेते? और इसी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जब हम घर बताते हैं कि हमने साइकियाट्री करनी है तो एक सफ़े मातम बिछ जाता है और हमें आगे से ये सुनने को मिलता है, जिससे मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि साइकियाट्रिस्ट तो खुद पागल हो जाते हैं और दूसरा साइकियाट्रिस्ट बिल्कुल पैसे नहीं कमाते और उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा होता है. और एक थर्ड क्वेश्चन जो भी इसका ही थर्ड बात बन जाता है कि अगर समहाउ हमने उनको कन्विंस कर लिया है सारा कुछ, तो फिर पाकिस्तान में किस हॉस्पिटल को हम ज्वाइन करें और कहाँ हमें फिर ट्रेनिंग करनी चाहिए? पाकिस्तान में कौन सा भी बेहतर रिकमेंडेड सेटअप है? Okay, so I think in terms of the first question, मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग नहीं करनी थी. No way, no how. ये डिसीजन मैंने बहुत पहले कर लिया था because by nature I'm a little bit laid back, lazy might be another word for it, and so जो हमारे यहाँ पे एक है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम होता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना सीखेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. So even back then I suppose I had some idea that I needed to be in a system which would push me because I have a hard time pushing myself. एक हर बंदे की अपनी तबीयत होती है ना. फिर अमेरिका जाने का शौक था, अम्मी अबू अमेरिका से पढ़े हुए थे. I didn't want to train in England either. My father used to say कि यार तू अमेरिका में तेरी सुई अड़ी हुई है, तू अगर नहीं होगा तो फिर तू इंग्लैंड चले जाना. And I was like, didn't dare say anything to him, but I was like, no, जाना है अमेरिका जाना है, बस और कुछ नहीं करना. So that never entered my mind कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाना तो मैंने था. If I hadn't gone to America, then maybe I don't know, maybe I wouldn't have been a psychiatrist. I was not very enthusiastic or inspired by any Pakistani psychiatrist or psychiatry that I had experienced at that time. मैंने AKU में जो काम किया था, I was happy working in the AKU system. I liked the hospital. I liked the people I work with. I actually appeared for their exam and I got selected for their internal medicine residency in AKU. I might have done that because I like the system so much. मुझे AKU में काम करना पसंद आया था, अच्छा सिस्टम था सारा. उन्होंने कहा था कि आप रुक जाएं, आप हमारे पास इंटरनल मेडिसिन कर लें. उस वक्त मेरा यूएस असेंबली का रिजल्ट आ गया था, and I had a good score and I was like मैं तो लिखा जा रहा हूँ. So
So, you know, if I hadn't gone to America, maybe I wouldn't have been a psychiatrist. I don't know. I can't answer that. और मेरी अपनी तबीयत ऐसी है, मैंने इस बारे में खुद भी सोचा है, साइकियाट्रिस्ट को जरूरत से ज्यादा सोचने का शौक भी होता है कि is there another, so you can look at the question another way, which is, if I think about it in retrospect, if I could do it all over again, knowing what I know now, would I choose to be a different specialist, surgeon, physician, gynecologist, whatever? No, I'm quite happy doing what I do. But if I had chosen something else, I'd be equally good at that. I mean, अगर मैं gynecologist करता तो मैं बेहतरीन gynecologist होता. अगर मैं surgery करता तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त surgeon होता. I know that for a fact. Because I would have done it with passion, I would have worked hard at it, I would try to do the best possible job. So एक तो वो बात है. दूसरी, I think आपकी जो जिन्होंने सवाल पूछा था, I'm a parent. My kids are almost adults. If they are truly convinced कि उन्हें यही करना है, तो फिर मैं उनको बताऊंगा जरूर कि इस तरह देख लो, इस तरह कर लो. लेकिन अगर वो अड़े हुए हैं कि हमने करना ही है, तो ठीक है, that's fine. I'm okay with it, and it's their choice. They need to own that decision, and then they need to carry it through. Psychiatrists पैसे कम बनाते हैं, that's true. Psychiatrists जो है, generally speaking, psychiatrists की income, let's say surgeons की income से या जो भी है उनकी income से generally speaking कम है. ये पाकिस्तान में कंपैरिजन करना मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई इकोनॉमिक मॉडल उस तरह से है नहीं. बट अगर आप अमेरिका की सैलरी उसमें करें तो जो प्रोसीजर बेस्ड स्पेशलिटीज हैं वो ऊपर हैं और जो नॉन प्रोसीजर बेस्ड स्पेशलिटीज हैं वो नीचे हैं. सो साइकियाट्री एंड पीडियाट्रिक्स एंड नॉन प्रोसीजर बेस्ड स्पेशलिटीज आर टुवर्ड द लोअर एंड. लेकिन once you become a doctor and you choose a specialty, you're going to be doing it for a long time. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 30-40 साल आपने वो प्रैक्टिस करनी है. 30-40 साल में आप थोड़े थोड़े करके भी पैसे बनाए तो बहुत सारे पैसे बन सकते हैं. 30-40 साल इज अ लॉन्ग टाइम टू मेक मनी. इसका एक सिंपल वे ऑफ पोजिंग द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, हाउ मच मनी कैन आई ऑफर यू टू डू समथिंग दैट यू हेट डूइंग? बता दो. अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया महीने का दे दूं और काम आपसे वो करवाऊं कि हर मिनट आपको लगता हो कि आपकी जिंदगी अजाब है, कर लोगे? If you hate doing what you're doing, I'll pay you as much money as you want, but you will hate doing it. Would you like to do it for the money? No, I don't think so. Not for long anyway. तो अगर उस तरह से आप क्वेश्चन को पोज करेंगे, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप एंजॉय कर रहे हो, जो आप उस क्वेश्चन को फ्लिप करके देख लेते हैं. Would you still like to do the same thing if nobody was paying you for it? And if nobody was paying me to be a psychiatrist, I would have to make a little bit of money somewhere to pay my bills, but I would still like to do this, even if I wasn't making any money. अब वो जाहिर है कि हम सरमायादाराना निज़ाम में रहते हैं, सरमाया तो चाहिए है, बिल देने हैं, तो फिर मुझे कुछ तो और थोड़ा बहुत करना पड़ता है बिल देने के लिए. लेकिन मैंने करना फिर भी यही था. मुझे अच्छा लगता है. I enjoy talking to people, helping them with their problems, whatever. I enjoy being a psychiatrist. So उस तरह से अगर आप क्वेश्चन को फ्रेम करें तो फिर सवाल थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाती है. इसको इन चीज़ों को अपने यानी पर्सनल पर्सपेक्टिव से समझने में ज़रूरी है कि आप वो किसी साइकियाट्री डिपार्टमेंट में, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी उस एनवायरनमेंट में आप कुछ ना कुछ आप इंटरेक्शन अपनी कर लें. अगर आपने एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए हाउस से बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ, तो फिर इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कुछ ना कुछ आपकी इंटरेक्शन हो किसी डिपार्टमेंट में, किसी के साथ, किसी मेंटोर के साथ, जो ये सवाल आपके साथ थोड़ा सा आपके ज़हन में क्लियर कर दे. और फिर आप जब खुद से अपने दिल से आपको लगता है कि यार मैंने यही करना है, then your task becomes easier in terms of talking to your family, talking to your parents, whatever. And if you are convinced, I think your parents or your family members will probably be reflecting your own hesitancy about the specialty. अगर आप खुद convinced नहीं है कि मैंने यही करना है, तो फिर वो भी convinced नहीं होंगे. लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया कि मैंने यही करना है, तो वो eventually they'll say, ठीक है मैं ये करना है, fine, करना है तो करो, that's all right. Yes, थोड़ा सा कम पैसे हैं, लेकिन काफी है. I mean, वो आपने सुना होगा मुहावरा, डॉक्टर कभी भूखा नहीं मरता.
जब आपने डॉक्टर बन गया है तो यू मेक अ लिवेबल इनकम, यू हैव एनफ मनी टू पे बिल्स. जहां में पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, जहां भी ओवर द कोर्स ऑफ अ डॉक्टर्स करियर यू विल बी कंफर्टेबल. द रेस्ट ऑफ इट, ऑफ कोर्स, you should do what you love doing. Doing something for the sake of money is the least intelligent way of doing something. I mean, really, I mean, you might say, you Shay and Shiza and all of you, कि सर आपके पास तो पैसे हैं, आप तो कह सकते हैं, लेकिन I assure you, no amount of money in the world is worth doing something that you're miserable doing. There's no amount of money in the world worth that. Of course, we all need to make a living, but doctors make a decent living. जो मर्जी कर लो. तो साइकियाट्री में भी डिसेंट लिविंग है, प्रैक्टिस कराने में देर लगती है, हाँ जी ठीक है, पैसे कम बनते हैं. अगर आपको काम पसंद है तो ठीक है, व्हाई नॉट, व्हाट्स रॉन्ग विद इट. एंड डोंट, प्लीज खुदारा, डोंट पिक अ स्पेशलिटी इन टर्म्स ऑफ कि जी मुझे इसमें पैसे कितने बनेंगे. वो भी बात हम करते रहते हैं जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया हुआ है. बीइंग अ डॉक्टर, leaving aside the moral argument कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, it's a calling, it's a profession, all of that. Being a doctor is guarantees a decent income, but practicing medicine is not really a very good way of accumulating a lot of money. काम बहुत ज़्यादा hours लगते हैं, और उसके बदले में उतने पैसे नहीं हैं. So अगर if you're interested in making money, you should be doing business, or you should be doing something else. I mean, being a real estate developer or घर बना, whatever, I don't know. But this is not a very efficient way. Being a doctor is not a very efficient way to make money, no matter what field you're practicing. So जो बंदा डॉक्टर बन गया पैसे बनाने के लिए, वो उसको थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा देखना चाहिए कि पैसे डिसेंट होंगे, लेकिन बहुत सारे पैसे एक्यूमुलेट नहीं होते डॉक्टरी में. अगर होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. उतना काम अगर आप किसी और फील्ड में कर लेंगे तो जल्दी पैसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे. So that whole argument really doesn't really make any sense. कि ये पैसे कम बनते हो, काफी पैसे, ठीक है, it's all right. Thank you, sir. Sir, we totally know that it's been like an hour, और time गुजरने का पता भी नहीं लगा. So let's have just last 2 questions, and then we will just wind it up. So first question is from सारा. आई डोंट नो ये किस मेडिकल कॉलेज की, लेकिन वो कह रही है कि अगर मुझे सर्जरी भी पसंद है और साइकाइट्री भी पसंद है तो कोई ऐसा इंटरवेंशनल साइकाइट्री टाइप चीज है जो कि मैं कर सकूं. और उनका ही एक बेसिकली इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ साइकाइट्री है या आगे कोई इसकी सब फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वुड बी के ऐसी 3 क्वालिटीज जो कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट में देखें तो आप कहेंगे हाँ इसको साइकाइट्री को लाजमी एक्सप्लोर करना चाहिए, और ऐसी 3 क्वालिटीज या बुरी चीजें आप देखें आप कहेंगे ना भाई तुम साइकाइट्री के करीब भी ना हो. सो दैट्स the last 2 questions for all right. So I think it's wonderful कि सारा जो है उनको साइकाइट्री और सर्जरी दोनों को शौक है. I'm not sure if you can pursue a career in both surgery and psychiatry in parallel. Psychiatry में surgical procedures as such नहीं है, but there are some interventions, or what you might call interventions, not surgical interventions as such, but things like ECT and आजकल TMS and all of these things. So there are some some nice things being done that that include some procedural type things that you can do also in psychiatry. By and large, psychiatry is a किसी ने लिखा lobotomy, but that's something else. That's historically so by and large, psychiatry is a non-procedural specialty. So if you like to work with your hands, then and you like to do operations or procedures and all that, then probably psychiatry you need to think about pursuing a surgical or an intervention specialty. अब तो interventions बहुत सारी specialties में हैं. Radiology में intervention है, of course gastroenterology में, cardiology में, surgery में. So there are lots of things where you can explore that. By the way, just in mental health and psychiatry and read about it, learn about it, all of those things. Just this morning I was writing an email to a Chemcolian, Dr. Humaira Sarfraz. She's a mentee of mine. She's finishing up her internal medicine residency in the US, about to start an oncology fellowship. She's going to be an oncologist.
and she has a very strong interest in psychiatry and mental health. And she always talks about, you know, the different aspects of the mental health aspects of her cancer patients and all that. So she likes it, she reads about it, वो पढ़ती है उसके बारे में और करती है, सोचती है. So you can maintain an interest in mental health and psychiatry while you pursue a different field, while you pursue a field of your choice. Because हमारी specialty psychiatry की specialty है, उसकी application हर medical field पे है. I mean, there are some aspects of it जो कि हर जगह पे apply होते हैं. So you don't have to confine yourself to only being a psychiatrist. You can explore that while as a surgeon, as a gynecologist, pediatrician, neurologist, or whatever that might be. उसके अलावा यूशी आपने sort of पूछा कि you know medical student में क्या qualities हो क्या you might be good fit for psychiatry. Sir, sorry to cut you. Before that, एक क्वेश्चन जो कि बार-बार आ रहा है कि क्या कोई सब स्पेशलिटीज एग्जिस्ट करती है साइकियाट्री में? Then you can. So yes, of course, yes, there are multiple subspecialties that you can pursue following psychiatry. Pakistan में, because our field is at a less developed stage, वो इतनी ज़्यादा अभी available नहीं है. So Pakistan में child psychiatry is being developed. In fact, one of the first programs in Pakistan in child psychiatry has just been approved a few months ago at King Edward. So Professor Nazish, who's our colleague, she's a UK trained child psychiatrist. She's going to be beginning training in child psychiatry at King Edward. It's one of the first programs in Pakistan. बहुत specialties और बहुत सारी हैं जिसकी formal training as a sub specialty in psychiatry आप कर सकते हैं. अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में भी नहीं आई वो sub specialty training, but available है. So you have things like forensic psychiatry, so which is treating, you know, mentally ill prisoners, the overlap between psychiatry and criminal behavior, things of that sort, the mental health of prison population, prisoners, all that. Then of course you've got a big field जो पाकिस्तान में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, which is substance abuse psychiatry, addiction psychiatry. वो that's a whole field, उसमें fellowships होती हैं अमेरिका में. So you've got child psychiatry की हमने बात की है. Other end of life stage, geriatric psychiatry is an established field. The psychiatric treatment of people who are older, वो है. There are you can specialize in psychotherapy, various types of psychotherapy. You have fellowships and research opportunities in, you know, in neuroscience, in various kind of research positions in neuroscience, all of that. So consult liaison psychiatry की भी training होती है अमेरिका में, which is basically providing psychiatric services to a general hospital. जिस तरह हमारे मेयो में call होती है ना कि psychiatry वालों को call भेजें. So अमेरिका में वो एक पूरी specialty है कि वो लोग जो consult liaison psychiatry में, so those psychiatrists have subspecialty training in dealing with psychiatric illnesses in medically or surgically ill populations. किस तरह consultations provide करनी है on the surgical floor to gynecologist, to oncologist, वो भी एक subspecialty है. Emergency psychiatry of the emergency room is also, so बहुत सारी subspecialty psychiatry मौजूद है जिसमें आप further pursue कर सकते हैं. Usually psychiatry की fellowship psychiatry की training अमेरिका में 4 साल की training होती है, पाकिस्तान में 4 साल की है. And then further subspecialty training is another 1 to 2 years if you choose to pursue it. So हाँ बिल्कुल बहुत सारी specialties हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में ज़्यादा well developed है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है develop होना शुरू हो रही हैं. But you know, as hopefully some of you join psychiatry and you know become psychiatrists, then perhaps with your help we can develop these specialties in Pakistan also. और research की हमने बात नहीं की, बहुत सारी research psychiatry में होती है, होनी चाहिए, further भी हो रही है. So you can do research fellowships and become a psychiatric researcher also. So बहुत सारी सब specialties हैं. So did you want to need to talk about? I'm not really sure what to say about medical student में क्या qualities होनी चाहिए that they would make a good psychiatrist. I would say the number one quality is of course having an interest in it. अगर आपको शौक है, आपको interesting लगती है कोई चीज़, that's the first thing. You know, it's a hands-off, mostly non-procedural specialty. So if you're comfortable with that, if you're comfortable with not doing a lot of procedures, then it's all right. You know, उसके अलावा, I mean, I think these two things are a good beginning in terms of what might be interesting to you.
उसको आप opposite कर लें, अगर आपको procedures का शौक है, you like to work with the hand, all of this, then psychiatry is probably not a good fit for you. You know, if you've had mental health difficulties yourself, अगर आपको depression रहा है, anxiety रही है, all of this, you know, sometimes people come into this field in order to master their own mental health challenges. कि हम psychiatrist बन जाएंगे, तो हमें जो खुद से problem है वो ठीक हो जाएगी. Which is all right. Perhaps yes, perhaps no. Nothing wrong with coming into a field because of that, but that's not a good reason only. सिर्फ इस वजह से psychiatry में आना probably not a good idea. अगर बाकी चीजें नहीं है तो. Now clearly, if a person has struggled with their own mental health issues, उनको interest भी develop हो गया होगा, so one can say कि वो perhaps they might be a good fit, but it works both ways, and you know you can look at that. Otherwise, I mean, I don't think there's anyone who's unsuitable to come into. आपकी शौक की बात है, उसका exposure ले लें, time spend कर लें, psychiatry में department में time spend कर लें, लोग जो psychiatry में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ time spend कर लें, उस setting में time spend कर लें जहाँ वो काम करते हैं. So don't just talk to a psychiatrist or somebody who's training in psychiatry at a coffee shop or at their home. Go to their workplace and spend time in the workplace and see what happens in that workplace. वहाँ क्या होता है? Patients देखे जाते हैं, round होते हैं, classes होती हैं, उनमें आप participate करके खुद देख लें, उनसे सवाल पूछ लें. You know, I for one, and certainly our department, and I've tried to inculcate this, we really love to have medical students come over to us and say, we have an interest in this thing. Can you please talk to us? We love hearing that. You know, मुझे तो बहुत ही खुशी होती है जब medical student या नौजवान डॉक्टर या young recent graduates मेरे पास आते हैं कि हमें शौक है, tell us more about it. I love doing that because I like what I do. I enjoy what I do, and I want to pass that on to anybody who's interested. And that, you know, talking to me or coming to our department doesn't obligate you to choose psychiatry as a profession. कोई आपको मतलब अगर आप आगे हो तो फिर कोई जबरदस्ती से नहीं है. आप बात करो, देखो, बैठो अपनी, और अगर आपको लगता है कि ये मेरे पसंद की चीज है तो ठीक है, that's fine. But get some exposure. That's the best way to get some idea. More important, because आपके undergraduate years में, आपके medical student years में हो सकता है कि आपको बिल्कुल exposure ना हुआ हो. तो थोड़ा सा अगर आप कर लोगे, it makes it easier. Thank you so much, sir, for giving us like more than an hour. It means a lot कि आपने इतना ज़्यादा time दिया. There are a few more questions, लेकिन क्योंकि we have taken the permission of 60 minutes from Dr. Ali Hashmi, so we will be having these kind of sessions again and again. और जहाँ तक बात है exploration की और मुख्तलिफ neuroscientific और इस तरह की चीज़ों की exploration की, so the main purpose of this whole interest group is to discuss these kind of things कि actually psychiatry में हो क्या रहा है throughout the world. So stay tuned with us and stay tuned with our interest group, and you will come to know gradually कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, how some people are doing some very amazing things. So thank you everyone for joining. Thank you, sir, for taking out your time. It means a lot. Thank you, Sheikh. Thank you, Shida. I see Dr. Fawzia Chima is here. Thank you everyone for joining us, and I'm delighted to be here. Best of luck to KemPsych and all of you who are thinking about a career in psychiatry. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.